Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well in your homes. Today we are going to do the diary of the 31st March 2021. So let's start from English language. So let's start from English comprehension diary. Unit number 4, page 27, use of must have. Okay students, open your books. Here we will discuss about the use of must have. When in the present we talk about the logical conclusions or assumptions about the past, we use the use of must have. It means जब हम कहते हैं कि ये काम गुजरे हुए ज़माने में हो चुका होगा या ये बंदा इस काम को कर चुका होगा, then we use the use of must have. We are not 100% sure, but we are sure from 70 to 80%. So let's have a look at some examples. Who has laid these eggs? Our hens must have laid these eggs. I think so. Now it is clear the use of must have. Read the sentences for more practice. Okay, let's read. Ahsan, I wonder why my aunt prepared so much food. Misbah, she must have expected many guests to her party. Okay, now go through this whole exercise for the practice. Now let's move to future indefinite negative plus interrogative formula, page 34, concise. Okay students, open your books. As you know students, in our previous diary we have discussed about the future tense, that the actions that has done in the future, in that case we use the future tense. Okay, in our previous diary we have discussed the affirmative and the negative form of the future tense. In our today's lecture we will discuss the interrogative form of the future tense. So let's have a look at the affirmative formula or the affirmative structure of a sentence. In an affirmative sentence we will use subject at the start of a sentence. Then we will use helping verb, that is will, shall, and then we will use first form of verb plus object. But when we will convert an affirmative sentence into negative, we will put subject at the start of a sentence. After that we will add helping verb will and shall. Will or shall plus not. It means in the negative sentence we will add not after helping verb, and after not we will add first form of verb plus object. But when we convert the negative sentence or an affirmative sentence into interrogative, we use the helping verb at the start of a sentence. Will, shall will be used at the start. Then we will add subject plus first form of verb plus object. Here are some examples. You can also consult for future tense from our YouTube channel Millat School and College, lecture 17, unit 5, Renant Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our science diary is chapter 3, long question number 6. Okay, my dear students, open the page number 40. Students, page number 40 पे long question number 6 देखिए. Elaborate the importance and the process of respiration in the plants. इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 36 और 37 पे देखिए. ओपन दी पेज नंबर 36. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पे देखिए 3.7 टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. मार्क कीजिए.
इसका फर्स्ट पैसेज आप कट डाउन कर दीजिए। आपका मेन आंसर यहां से स्टार्ट होगा, द breakdown of complex high energy molecules takes place in the cytoplasm and mitochondria to yield energy. The breaking down of the high energy carbon compounds within the cells results in the release of great amount of energy. This process is called cellular respiration. The compounds change into different ones by a series of steps. Next पेज नंबर 37 पे देखिए steps. There are two types of respiration. Types of respiration में है जी, there are two types of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration requires oxygen and releases lots of energy along with carbon dioxide and water. Aerobic respiration में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है प्लांट्स को, और anaerobic respiration इससे ऑपोजिट है कि does not require oxygen but releases much less energy. Aerobic respiration की क्वेश्चन देखिए, C6H12O6 plus 6O2 into 6CO2 plus 6H2O plus energy. इसी तरह आपने दी कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ये पैसेज भी करेंगे स्टूडेंट्स, एरोबिक एंड एरोबिक, और लास्ट वन पैसेज करने के बाद अब आप इंपॉर्टेंस पे आ जाइए क्योंकि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस की भी डिमांड की गई है। फर्स्ट वन इंपॉर्टेंस देखिए, it is the largest source of carbon dioxide to the atmosphere. Second one importance देखिए, cellular respiration is an important phenomena as it provides the energy to living organisms to perform all the functions for the maintenance of life. Most single-celled organisms such as bacteria do not require much energy. Next line cut कर दीजिए। Fourth one is our ability to think, walk and talk require enormous amount of energy which can only be provided by aerobic respiration. Last one is the some of the energy is also released in the form of heat by respiration. ये 5 importance हीट बाय रेस्पिरेशन तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। Dear students, today we will discuss our maths diary for class 6. Today's diary is exercise 3C. Now open your books, page number 48. Exercise 3B, question number 2. Find the prime factorization of the given numbers by repeated division method. Dear students, कल आपको repeated division method का कॉन्सेप्ट समझाया गया था। आज हम उसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 देखिए। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास अमाउंट है 333। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने कल क्वेश्चंस किए आज भी उसी तरह हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोएस्ट प्राइम फैक्टर से, लोएस्ट प्राइम नंबर से। तो हमारे पास लोएस्ट प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 3 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए अब हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 333, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। अब हमारे पास आ गया 111। इसी तरह अब हम 111 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। 3 3 9, 2 कैरी चला जाएगा तो वो हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 21। तो 3 7 21। अब 37 हमारे पास एक प्राइम नंबर आ चुका है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा। तो 37 1 37। इस तरह जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसलिए स्टॉप कर दी क्योंकि हमारे पास लास्ट पे जो नंबर है वो 1
आ चुका है। तो इस तरह ये था हमारा पार्ट नंबर 8। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना है, जिनका सलूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन इंडेक्स नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इंडेक्स नोटेशन के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने एलसीएम वाले क्वेश्चंस किए तो हमारे पास कुछ वैल्यूज, कुछ प्राइम फैक्टर्स या कुछ प्राइम नंबर्स ऐसे भी आ रहे थे जो रिपीट हो रहे थे। तो उन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम पावर्स में या इंडेक्स में लिख लेते हैं। इंडेक्स इज द कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नोटेशन का सॉल्यूशन देखिए। पार्ट 1 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे। इसी तरह 3 भी हमारे पास रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। जितनी दफ़ा रिपीट होगा कोई भी डिजिट, उतनी दफ़ा हम उसकी पावर में वो नंबर लिख देंगे। इस तरह 3 की पावर में हम 3 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास लास्ट में 5 सिंगल है, तो इसकी पावर में हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह हम इंडेक्स नोटेशन में इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे। जिस तरह आपको पार्ट 1 बताया गया है, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करना है, जिसका सलूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डायरी। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन्हें रजिस्टर्स पे नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।